written difference is 1 for which number and borrow is 1 for which number. Whether you have noted down all these points? आप लोगों ने नोट डाउन किया है? Whether you are able to understand? Okay. ठीक है. We'll write a K-map for this particular expression. Okay, difference था summation m 1 2 4 7 है ना, एंड इसका के मैप लिखेंगे हम लोग. ओके, के मैप 3 वेरिएबल का के मैप आएगा ना, बिकॉज 3 इनपुट्स आर देयर. 3 वेरिएबल का के मैप आएगा. वेरिएबल्स क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट आर द वेरिएबल्स? ABC. ABC. यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? B और C आएगा. बराबर है. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इधर आएगा आपका 0 0 0 1. ओके, 1 1 एंड यहाँ पे आएगा 1 0. ओके, 1 2 4 7 है. इधर 0 1 2 3 रहता है ना, इधर 4 5 6 एंड 7. ओके, सो ग्रुपिंग कैसे करोगे? कैन यू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू ग्रुप द वंस हियर? How you are going to group the ones? Single ones. Okay, single one आएंगे. Okay, very good. Single one आएंगे. Single one आएंगे. Okay, ये expression कैसे आता है? Already हमने full adder में देखा है. Okay, I am not going to repeat here. Suppose you always remember that एक cell छोड़ के नेक्स्ट सेल में अगर आपने 1 लिखा है, ऐसे एडजेसेंट का सिंगल 1 का ग्रुपिंग होता है. द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सओर ऑपरेशन. सो हियर द डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज द एक्सओर ऑपरेशन ऑफ ए बी एंड सी. एक्सओर ऑपरेशन ऑफ ए बी एंड सी. Okay, now we'll implement borrow also. Borrow का expression आया था आपका BO is equal to summation m. Expression was 1 2 3 and 7. Same thing मैं आप K map I'll write here K map. Okay, 3 variable K map because there are 3 inputs. Okay, so 8 cells. Same thing, whatever I have written for the difference here, ABC, and I think मैंने एक extra cell add किया है. एक्स्ट्रा रो ऐड हो गया. ओके, सो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. ओके, इट इज 1 फॉर व्हाट? 1 2 3 7. सो 1 2 3 एंड 7 यहाँ पे है ना. ओके, टेल मी द ग्रुपिंग हियर. टेल मी द ग्रुपिंग. ग्रुपिंग कैसे करोगे? हेलो, 3 पेयर. 3 पेयर. वेरी गुड. 3 पेयर्स बनेगा. एक तो पेयर ये बनेगा, एम आई करेक्ट? दूसरा पेयर ये बनेगा, एंड व्हाट इज अ वन मोर पेयर? दिस वन. ओके, टेल मी द एक्सप्रेशन. टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर द बोरो. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? Tell me the expression for borrow. A bar Very C good. A bar C plus BC plus BC. Very good. plus A bar B Plus A bar B. Perfect answer. Plus A bar B. Can you tell me what was the expression for the full adder?
What was the expression for the full adder? For carry. Yes, carry. In the same way, we have written It was AB AB. plus BC. plus. हाँ, Perfect. बताओ. AB plus BC plus C. ओके, AB प्लस BC प्लस CA. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. When you are writing AB, A bar B it is, and when you are writing AC, it is A bar C. Okay. Now, or one more expression is, if you remember the expression for the carry of a full adder. Carry का expression हमने ऐसे लिखा था. If you remember, CI into A XOR B, CI into A XOR B प्लस क्या लिखा था आपने? प्लस क्या लिखा था? What you have written? Plus AB लिखा था आपने. ओके, AB लिखा था आप लोगों ने. यहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बोरो के लिए? Let me write an expression for the borrow here. Same way, in the similar way, जैसे आपने full adder के लिए लिखा था, वैसे ही हम लोग full subtractor के लिए लिखेंगे. This will be equal to, इधर क्या हो जाएगा, जहाँ पे A है ना उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा. मतलब the expression will be C into A XOR B complement, A XOR B complement plus A bar B is the expression. Instead of only AB, the expression will be A bar B. Okay, this is the expression for the borrow for the full subtractor. Okay, अगर आप इसका grouping करोगे ना, the grouping will be like this. Okay, अगर आप के मैप यहाँ पे लिखोगे, okay, 8 cells का के मैप कैसे बनेगा? borrow का के मैप, the variables are A, B, C. So here 0, here 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. Okay, it is 1 for 1, 2, 3, 7, isn't it? 1, 2, 3, 7. Okay, बाकी सब यहाँ पे 0 रहेगा. So here the grouping will be, कैसे grouping हो जाएगा उसका? This one will be grouped individually, and there will be one pair and this one. अगर आप ऐसे grouping करोगे, the expression that you will get is this expression. For this K map, you will get this expression. Okay, आपको ये expression remember करना पड़ेगा. C into A XOR B complement plus A bar B. Okay, इसका implementation जो है that is simple. Difference के लिए तो आपको XOR gate लगेगा. Okay, if you want to implement the borrow, the expression for the borrow will be like, you need a NOT gate, you need AND gate because of this A bar B, and OR gate you'll require, and as well as the XOR gate. Okay, whether you have understood the full subtractor, is there any doubt here? Is there any doubt regarding the full subtractor? Hello? No, ma'am, no doubt. Okay, no doubt. Okay. Whether you have noted down the expression? 1 minute, ma'am. 1 minute. I'm done. You can share. Okay. Next page ले रही हूँ मैं. Okay.
Now, what I'll do is I'm going to take a 4-bit number. For example, let us assume that A is a number. The size of this A is 4-bit. Suppose A3, A2, A1, and A0. This A3 here is MSB, that is the most significant bit, which is having the highest weightage, and this A0 is called as LSB. I'm going to take one more input, that is B, which is also a 4-bit number. So suppose B3, okay, B2, B1, and B0. I want to add these two numbers. Okay. See here, the logic is, we'll take one example. Let us assume that I want to add 1, 1, 0, 1 with 1, 0, 1, 1. This I am going to add. Okay. Sir, lecture. नहीं अभी खत्म हो. So I want to add the numbers A and B. Both are of size 4-bit. Okay. If I add 1 with 1, what is my result? What is the sum? When you add 1 with 1, what is the sum? Sum 0 carry 1. Sum, okay. I'll use Sum a 0 different color for this one. So that you can understand. तो मैं difference क्या बता रही हूँ वो पता चलेगा. Okay. 1 plus 1, sum is 0, carry is what? 1. है ना? Now tell me, what is the sum here? What is the sum here? Sum 0 carry 1. Sum 0 carry 1. Carry 1. Sum 0 carry. Okay, okay, very good. और यहाँ पे Same. sum 0 carry 1. Sum 0 carry 1. और यहाँ पे Sum 1 carry 1. Sum 1 carry 1. Sum 1 carry 1. Okay, वो carry 1 को मैं यहाँ पे लिखूंगी. Okay. Now tell me, when you added 1 with 1, which adder you are going to use here? Whether half adder or the full adder? Full adder. Half adder. Half adder. Okay. एक किसी का आंसर हाफ एडर है and किसी का आंसर फुल एडर है. I am going to write both the half adder as well as full adder. Okay. When you add 1, 0, 1, आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? When you add Full adder. obviously full adder ही यूज करना पड़ेगा. Okay, full adder आप यूज करेंगे यहाँ पे. Okay. When you add 1, 1, 0, कौन सा एडर आप यूज करेंगे? फुल एडर. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? Full adder. Okay, full adder. What is my conclusion here is, when you add 4-bit numbers, you need to use either 4 full adder or 3 full adder and 1 half adder. Isn't it? आप इसमें क्लियरली देख रहे हो. सपोज यहाँ पे क्या है? 1, 1 है. प्रीवियस कैरी इज 0. ओके, 1, 1 जब आप ऐड करते हो तो आप हाफ एडर यूज कर सकते हो. ओके, और एल्स यू कैन यूज फुल एडर ओनली. So in order to implement the 4 bits, you require 4 full adder or 3 full adder and 1 half adder. इसको बोलते हैं, this is nothing but parallel adder बोलते हैं इधर. The parallel adder हम लोग डिस्कशन करेंगे, that we are going to discuss in the next lecture. So parallel adder मतलब
here what you are doing is you are adding 4 bits with the help of 4 full adders, है ना? So this is called as a 4-bit parallel adder. That is using the full adder. That is using the full adder. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने 1 को ऐड किया, whatever the carry that you have added is, it is going to the next stage. It is going to the next stage. Okay, if you can see here, the carry is added with the next stage. Here also carry is added with the next stage. So what is the conclusion here is, one more conclusion is, when you add 4-bit numbers, the result will be sum and carry only. Sum here, the size of the sum is what? Sum is what? Size of the sum is what here?